रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे। और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਬੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। Hi, you're watching The Suvera. This is Amarpal Singh. Before you today, the city-led Aryan Gupta has secured the AIR-1 in NEET UG and made the state proud. We are having with us Aryan Gupta with us. So many congratulations first of all. Thank you so much for having me. How you take this AIR-1 rank in the NEET UG exam? Actually, it is quite inconceivable. बहुत ज़्यादा वही सपने जैसा लग रहा है. असल नहीं लग रहा, अभी भी jitters आ रहे हैं, goosebumps आ रहे हैं. तो yeah, I'm really happy. My parents are on top of this world right now. Right. And my teachers, everyone, my big brother, they're all really proud of me. What is your aim and how you prepared for this exam? मेरा एम तो है कि ऑन्कोलॉजिस्ट बन पाऊँ, कैंसर का डॉक्टर बन पाऊँ, और वही नीट यूजी की प्रिपरेशन 11th और 12th से कर रहा हूँ. और यही है कि हर दिन का पढ़ना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है. यू कैन नॉट टेक अ डे ऑफ, यू कैन नॉट अफोर्ड टू टेक अ डे ऑफ. ऐसा है कि अगर बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो जाए तब घूमने चले आओ. ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है. मैं नेटफ्लिक्स भी देखता था, एनिमे बहुत देखता था, शौक था. बहुत मतलब नहीं, बट स्टिल शौक था देखने का. So how much time you used to devote to your studies? Initially तो 6 hours classes, 5 to 6 hours self study. तो initially it was 12 to 14 hours till the major part of 11th and 12th. End तक आते आते 1-2 महीने मैंने 16-17 घंटा भी पढ़ा है. Right. Right. Who was your biggest motivation? As we have learned that your elder brother, he also scored AIR 54 in this NEET UG. So, what do you want to say about it? Your all family members, they are into this profession. हाँ, मेरे परिवार के बहुत सदस्य क्या कहते हैं इस डॉक्टर लाइन में ही हैं. बट द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर दिस रिजल्ट वॉज माई बिग ब्रदर आदित्य गुप्ता. उनका वही 54 रैंक आया था नीट 25 में, और वो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं. उन्होंने मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा मदद करी मेरी. ऐसा था कि जो भी उन्होंने मुझे पहले ही बता देता कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी है. ऑलरेडी एक प्री प्लान क्या कहते हैं, प्री मेडिटेटेड क्या कहते हैं प्लान दे दिया था कि ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी. फ्रॉम द गेट गो 11th से ही बोल दिया था कि भाई कभी ना सोचना कि आपको बहुत ज़्यादा आता है. टीचर्स को फॉलो करते रहो, जितना टीचर्स बोलते हैं वो करते रहो, और लाइक फिर जो भगवान के हाथ में होगा वो हो जाएगा. Right. What you want to give a message to the budding aspirants who are preparing for such exams? अगेन यही है कि अपना ज़्यादा दिमाग लगाना, इन द सेंस कि ओवर स्मार्ट होने की कोशिश करना कि यार टीचर ने तो अच्छा नहीं पढ़ा रहा, ये यहाँ से देख लिया, ये यहाँ से कर लिया, वो गलत है. जो टीचर्स तुम्हारे कह रहे हैं, यू कैन बी फ्रॉम एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, फॉलो देम. जो होमवर्क देते हैं वो डिलीजेंटली करो. और एक बात है, अगर ईमानदारी से मेहनत करोगे भगवान तुम्हारे साथ होगा. So, Aryan, there was an incident of paper leak also, and now Sonam Wangchuk, he's on the hunger strike. So, how you see the entire system? The questions are being raised on the exams. यही लगता है कि अगेन आई थिंक इट्स अ रियली हम्बलिंग मूव बाय सोनम वांगचुक जो उन्होंने किया है, द स्टैंडिंग अप फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया. क्योंकि ये है कि जैसा मर्जी पेपर लीक हुआ, वो हुआ, देयर आर फॉल्स, देयर आर क्रैक्स इन द सिस्टम. एट द एंड तो बच्चे ही क्रॉस फायर में मर रहे हैं ना. दे आर गेटिंग स्टक इन द क्रॉस फायर. एक्चुअली द पीपल हु आर रियली अफेक्टेड, हु रियली फॉल इनटू डिप्रेशन आर द स्टूडेंट्स. So I really hope, of course, no system is perfect. Education system can achieve perfection. It can become better. It can always become better. Right. I really hope कि जो हमारे साथ हुआ इस साल 2026 के अंदर, I really hope किसी भी एग्जामिनेशन में बाकी बच्चों को ऐसा एक्सपीरियंस ना करना मिले. We are having with us parents of Aryan Gupta. Ma'am, many congratulations. First of all, your ward has bagged AIR-1. What are your feelings? I am feeling very good, very proud moment for me. इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? Right. How he prepared? What was your support to him? He was very hardworking, ambitious, focused child since start of this course, and his teachers also helped him a lot.
his circle, friend circle, and naturally ourselves, me and my husband and his brother supported a lot. Right. As you both are into the medical profession, how you see this rank as a important rank for him? इससे ऊपर रैंक तो कुछ हो ही नहीं सकती और Right. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रैंक एंड एक्चुअली ही एम्ड फॉर दैट एंड ही गॉट दैट. Right. So, what do you want to say about your child's achievement? Happy, elated, over the moon. I think no words can explain the feeling. We knew that he will do well, but getting there and achieving rank 1 is totally unbelievable. It is just a surreal moment for us, like a dream situation. Right. So we are very, very, very happy. Right. Sir, as you are already into medical profession and you know that it is quite difficult to prepare for the medical as well as such kind of a competitive exam. So how your ward prepare for it and how much time he used to devote? It is not a two-year journey. It is a 10-12 years journey. From class 1 onwards, he has been preparing for some Olympiad or some exam, one or the other exam he has been giving every year. So that journey has culminated in rank 1. We see only first rank. We don't see the pain behind it, the journey behind it. So he was totally dedicated himself. We never forced him to take medical or non-medical or any other field. We just wanted him to take any good field and be happy with it. Right. But he chose medical because his grandfather is a doctor. Parents, uncle, aunt, bua, fufa, everyone is a doctor. So by seeing everyone, he just wanted to be a doctor and he excelled in it. Right. Your elder son also is into this profession? My elder son, he's got All India 54 rank last year. Okay. And he's studying first year MBBS in Maulana Azad Medical College, Delhi. Right. I think he was the biggest motivation for my younger son to do even better than him. Right. His only dream was to achieve one number more than the elder brother so that he can have one upper hand. Right. the elder brother helped him in doing that and he scored first rank. Right. Thank you. So he was Aryan Gupta and his parents, they are over the moon as Aryan Gupta has achieved AIR1 in NEET UG exam. So where Aryan Gupta, he expressed the concern over the incidents of paper leak and he mentioned on the other side, he also mentioned the key tips for the budding aspirants and he also mentioned about his aim of becoming oncologist and he's preparing up for the same. So he also mentioned that he got the big motivation from his elder brother who is also into this medical profession as well as his parents and other family members, they are also in this profession who became a big motivation for him. So we will keep updating you. Stay tuned to Doswira for more updates. Amarpal Singh with cameraman Sandeep Singh.